Today is the birthday of Most Reverend Bishop Paul Andreotti. Bishop Paul Andreotti left us in 1995, and we have started this tradition to celebrate the lives of all our bishops, priests, and lay people so that we could remember them and learn from their experience in life. And Bishop Paul to me was a saintly man, a living legend. He left a good example not only to his diocese but to the whole of the church in Pakistan and in the world. He inspired thousands of people when he was a bishop. And I feel honored today that I am presenting this video so that we could honor Bishop Paul's life and pay him tribute. Thank you. अजीज दोस्तों, आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मेरा नाम लॉरेंस सेल्डाना है। मैं लाहौर डायसिस का साबिक आर्च बिशप हूँ। आज मैं अपने दोस्त बिशप पॉल एंड्रियोटी की याद में खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। बिशप पॉल का ताल्लुक इटली से था। वो 1921 में पैदा हुए। वो डोमिनिकन जमायत का मेंबर थे और वो काहिन भी थे। सन 1970 में बिशप पॉल पाकिस्तान पहुंचे और फैसलाबाद में काम किया। सन 1976 में वो फैसलाबाद का दूसरा बिशप मुकर्रर हुए थे। उन्होंने अपने लोगों के साथ बहुत शफकत और मोहब्बत और हलीमी से पेश आते थे और उनकी खिदमत करते थे। सन 1984 में उन्होंने अपना ओहदा पाकिस्तान के पहले पंजाबी बिशप यानी बिशप जॉन जोसेफ को संभाला था, लेकिन उन्होंने मज़ीद 10 साल के लिए पाकिस्तान के कलीसिया के लिए काम किया था। आज हम उनको 3 खास बातों के लिए या शोबों के लिए याद करते हैं। सबसे पहले मोमिनीन की तरक्की और बहबूद। उन्होंने मोमिनीन की तरबियत के लिए, ख़ास तौर पर ख़ानदानी ज़िंदगी की तरबियत के लिए बहुत से तरबियती प्रोग्राम्स मुकर्रर किए थे और मज़ीद कलीसिया के काहिनों के लिए भी उन्होंने काम किया था और तरबियत गाह बनाया था। यानी फैसलाबाद डायसिस में सेंट थॉमस माइनर सेमिनरी यानी कि छोटी सेमिनरी बनवाया था और ये सेमिनरी नौजवानों को काहिनाना खिदमत करवाती है और उनको तैयार करती है। और आजकल बहुत सारे काहिन इसी सेमिनरी से निकलकर कलीसिया की खिदमत करते हैं। इसके अलावा लाहौर में सेंट फ्रांसिस जेवियर सेमिनरी जो कि फ़िलॉसफी सेमिनरी है, उसको भी बनवाया था, पैसा इकट्ठा किया और इस अदारे को तैयार किया था। फिर वो काइटास का नेशनल डायरेक्टर था और उन्होंने काइटास के मरकज़ी दफ्तर को तामीर करवाया था लाहौर में। और ये अदारा गरीबों और लाचारों के लिए काम करता है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आज हम बिशप पॉल को याद करते हैं और हम खुदा का शुक्र करते हैं इस अजीम रहनुमा के लिए और दुआ करते हैं कि खुदावंद उनको हमेशा की ज़िंदगी और हमेशा का आराम बख्शे और उनको अपनी सारी खिदमत के लिए सिला दे। हम भी कोशिश करें
کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں اور خلوص دل سے کلیسیا کی ترقی کے لیے اور کلیسیا کے بہبود کے لیے ہم بھی کام کریں. خداوند آپ سب کو برکت دے اور آپ کو سلامت رکھے. آمین. I had got to know Bishop Paul Andreotti during my occasional visits to Faisalabad Diocese to preach conventions at various occasions. And then during my occasional visits for the Justice and Peace meetings. I always found Bishop Paul to be a very gentle, a welcoming person, a very caring person. I found he had a great concern for his priests and catechists and for his flock. In other words, I found him playing the role of a true pastor, of a true good shepherd. I never saw him as a bishop. In fact, even when he was there at the convention, he had that same gentle and welcoming, relaxed approach towards meeting the people before the convention and after the convention as well. I got to know him. In fact, I saw Bishop Andreotti as an interim bishop because he took over as bishop of the diocese in 1976, but within 4 years, by 1980, he appointed Bishop John Joseph to succeed him, to be the Bishop of Faisalabad. I had known Bishop Paul Andreotti, OP, for many years. My first encounter with Bishop Paul Andreotti was when he was chairperson of National Episcopal Commission for Laity. And I found and discovered that he was utterly interested in the formation of laity and participation of laity in the church and leadership by laity in the church. My second experience of Bishop Paul Andreotti was when I was rector of Christ the King Seminary, Karachi, National Seminary, and he was chairperson of Priestly Formation and Seminary Commission in Pakistan. So we had many encounters, dialogue, discussing formation and leadership in the church and pastoral priorities in the church and how to apply these priorities in the seminary formation. My third point about Bishop Paul Andreotti is not my encounter, but historically I would like to emphasize that in 1958, when first time full Urdu Bible was translated and printed in Pakistan by Society of St. Paul, Rome, and from 1958 till 2002, the existence and foundation of Catholic Bible Commission Pakistan, Bishop Paul Andreotti has been a pioneer, great pioneer for promotion of the Word of God in Pakistan. He helped the church in printing the Word of God in Rome, bringing it to Pakistan, and also together with the Daughters of St. Paul, distributing Word of God in Pakistan. So almost 8 times Bible was printed, and all this work was done through Bishop Paul Andreotti and under his guidance and through his help. So I would like to pay tribute to Bishop Paul Andreotti OP by emphasizing these 3 his pastoral priorities in Pakistan. First, laity in the church, the formation of laity, leadership of laity, and training of laity. Second, formation of future priests, formation of future leadership in the local church. And third, the Word of God in the local church. Our people they show great devotion to the Word of God, and Bishop Paul Andreotti played a great pioneer role in bringing Word of God, written Word of God in Pakistan.
बिशप पॉल अंद्रियूती एक इटालियन मिशनरी थे जिनका डोमिनिकन घराने से तल्लुक़ था। वो हमारी डायसिस के दूसरे बिशप हैं। नहायत ही सादा, सबका ख्याल करने वाले और दुआगो। उन्होंने डायसिस के लिए, काहिनों की तरबियत के लिए बहुत ग्रां कदर खिदमात अंजाम दी है। मुझे ज़ाती तौर पर कायल करते रहे कि मैं भी रोम में आला तालीम हासिल करूं ताकि असम्बली में ज़ेर तरबियत तालिब इल्मों की मदद और रहनुमाई कर सकूं। उन्होंने मकामी कलीसिया के लिए, मोमिन की तरक्की के लिए बहुत खिदमत अंजाम दी है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ऐसा नेक, दयानतदार और रास्तबाज चौपान दिया जिन्होंने डायसिस ऑफ फैसलाबाद और पूरे पाकिस्तान में लातादाद खिदमत अंजाम दी है। मेरी दुआ है कि खुदा अपने इस बंदे को हमेशा अपने ईवानों में रखे और उनकी सारी खिदमत के तफ़ैल हमारी डायसिस, हमारे मोमिन और हमारे घरानों में अमन, तरक्की, खुशहाली आए। Thank you, Bishop Paul Andriuti, for all what you have done for Pakistani Church. God bless you. तकद्दस मुआब बिशप पॉल एंड्रयूती ओपी 23 दिसंबर 1921 को इटली में पैदा हुए। 5 अक्टूबर 1947 को कहानत की खिदमत के लिए मखसूस हुए और 6 मई 1972 को उन्हें फैसलाबाद का मुआवन बिशप मुकर्रर किया गया। 8 दिसंबर 1976 को वो फैसलाबाद के दूसरे बिशप बनाए गए। 9 जनवरी 1984 में उन्होंने बिशप डॉक्टर जॉन जोसेफ को फैसलाबाद का तीसरा बिशप बनाया और मकामी क़यादत उनको सौंपी और वो पाकिस्तान के पहले पंजाबी बिशप होने का एजाज़ हासिल किया। 10 जुलाई 1995 को इटली में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। बिशप पॉल अंद्रियूती नहायत ही संजीदा, मुखलस, हलीम और फराख दिल थे। उनके कौल व फ़ेल में कोई तज़ाद नहीं था। वो जो कहते थे वो करते थे और जो करते थे वो कहते थे। बिशप पॉल अंद्रियूती ने लोगों की तालीमी, समाजी और रूहानी तरक्की को अपनी अव्वलीन तरजीह समझा। नज़ीर कैसर ने कहा था कि हम अगर आज ख्वाब देखेंगे, लोग कल इनकलाब देखेंगे। तो फैसलाबाद डायसिस की कलीसिया, फैसलाबाद डायसिस के काहिन, डायसिस के सिस्टर साहबात और मोमिनीन, वो ये 3 चीज़ें देख सकते हैं। सबसे पहले तालीमी लिहाज से उन्होंने बहुत सारे अदारे जो हैं वो तामीर किए, हॉस्टल्स तामीर किए, स्कूल बनाए और फिर आप सबको पता है कि उन्होंने काफ़ी नौजवानों को इटली में आला तालीम के लिए और डॉक्टर बनने के लिए भेजा। उनमें से मेरे एक क्लासमेट डॉक्टर अनवर पॉलूस हैं जो आजकल इटली में डॉक्टर की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। खुशपुर के लिए उन्होंने जो कुछ किया है, मैं 5 साल में वहाँ रहा हूँ और खुशपुर के लोग मोगे के हवाले से उन्हें बहुत याद करते हैं कि बिशप पॉल उस वक्त खुशपुर में फादर की हैसियत से काम कर रहे थे,
تو انہوں نے ان کے لیے موقع حاصل کیا ان کی سماجی ترقی کے لیے. تعلیمی ترقی کے لیے سینٹ تھامس ہائی اسکول کی عمارت کچی تھی اور انہوں نے بھٹا بنایا خوشپور میں اور پھر پکی اینٹوں سے از سر نو سینٹ تھامس ہائی اسکول کو تعمیر کروایا. انہوں نے بہت سارے ہاسٹلز بھی کھولے اور کانوینٹس بھی کھولے. سو ہر لحاظ سے انہوں نے کوشش کی کہ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہ اپنی بلاہٹ کو پہچان سکیں اور سیمنریز میں جائیں اور کانوینٹس میں جائیں. بشپ صاحب کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ ان کی زیر نگرانی سینٹ تھامس دی اپاسل سیمنری جو فیصل آباد کی مائنر سیمنری ہے وہ تعمیر ہوئی. کاہنانہ رفاقت 1993 میں شروع کی گئی اور اس میں بھی بشپ صاحب نے نمایاں کردار ادا کیا. جب میں خوشپور میں تھا تو میرے والد صاحب لاہور میں بیمار ہوئے تو بشپ ڈاکٹر جان جوزف نے انہیں وارس پورے میں ٹیلی فون پر بتایا کہ فادر جی کے والد بیمار ہیں اور کل وہ لاہور ان کی قیادت کے لیے جا رہے ہیں. بشپ صاحب نے اپنے ڈرائیور کو خوشپور میں بھیجا تاکہ وہ مجھے خط دیں تاکہ میں اپنے والد کو وہ دے سکوں. تو اس خط میں بشپ صاحب نے میرے والد کی صحت یابی کے لیے دعاؤں کا ذکر کیا اور ان کے لیے دعائیں کی اور پھر اس میں انہوں نے اپنی فراخ دلی کا اظہار بھی کیا کہ یہ میری طرف سے اپنے والد صاحب کو دے دینا. جب میں اکاڑا میں تھا تو بشپ صاحب جب بھی ساہیوال میں گئے یا وہ چھ چک میں گئے یا رینالا خرد میں تو دوپہر کا کھانا وہ ہمیشہ میرے پاس آ کر کھاتے تھے اور پھر وہاں آرام کر کے تو پھر واپس وارس پورہ میں جاتے تھے. اور جانے سے پہلے وہ مجھے بغیر بتائے ایک لفافہ جو ہے وہ میرے بیڈ روم میں وہ رکھ جاتے تھے. تو ان کی فراخ دلی کو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا. جب میں خوشپور علاقے میں تھا تو بشپ پال اندریوتی کی مدد سے میں نے 5 گرجا گھر مختلف گاؤں میں بنائے. تو بشپ پال نے میری بہت رہنمائی کی اور مجھے بہت میری حوصلہ افزائی کی. میرے لیے تو بشپ پال ایک مقدس کی حیثیت رکھتے ہیں. میں فادر خالد رشید آسی پیرش پریسٹ ہولی روزری پیرش مدینہ ٹاؤن فیصل آباد. مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں اپنے اجداد میں سے فیصل آباد ڈائسس کے دوسرے بشپ پال اندریوتی کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہوں. بشپ پال اندریوتی میری یادوں اور میری زندگی کا اہم اثاثہ ہے. میں انہیں بچپن سے جانتا ہوں. جب میں نے ان کے ہاتھوں سے یوخرسٹ کا سیکرامنٹ حاصل کیا اور ایک التار بوائے ہونے کے ناطے سے ان کے ساتھ اقدس قربانی میں ان کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا. مجھے یہ بھی یاد ہے اور میں کبھی بھول نہیں سکتا کہ جب وہ بشپ تھے تو انہوں نے مجھے سینٹ میری سیمنری مائنر سیمنری لاہور میں بھیجا تاکہ میں کاہن بن کر فیصل آباد ڈائسس میں کام کر سکوں. انہوں نے کاہن بننے تک میری ہر قسم کی مدد کی اور میری رہنمائی کرتے رہے. اس کے بعد کاہن بننے کے بعد بھی وہ میرے پیرش میں آتے، میرے پاس رہتے اور مجھے ہدایات اور روحانی زندگی کے بارے میں بتاتے رہتے. میں ان کا تہ دل سے شکر گزار اور ممنون ہوں کہ وہ میری زندگی کا حصہ بنے رہے.
मुकद्दस मुआब बिशप पॉल अंद्रियोती साहिब एक मुनफरिद इंसान, इल्हामी बिशप और रूहानी पेशवा थे। उनकी रूह की एक खूबसूरत दास्तान है। वो इल्म का खजाना, मर्द खुदा, बेसाख्ता खुदा से और खुदा के मुतल्लिक बातें करने वाले इंसान थे। हम अक्सर उन्हें चलते फिरते मुकद्दस डोमिनिक कहा करते थे। डायसिस की भारी जिम्मेदारियां भी उनके डोमिनिकन मोटो यानी ध्यान और ज्ञान करना और इसका फल दूसरों में बांटना कभी रुकावट न बन सकी। उन्होंने डोमिनिकन जिंदगी के असूल और ज़वाबित और नज़्म व नस्क को अपनाते हुए रसालती ज़िंदगी को मज़ीद मौसर बनाया। तकाज़ाए वक्त और मंसूबा खुदा को मद्देनज़र रखते हुए डायसिस को उन्होंने आला बुनियादों पर उस्तवार किया, उसे मुख्तलिफ रीजन्स में तकसीम किया, लोगों के रूहानी और जिस्मानी मसाइल को बेहतर तौर पर हल करने के लिए पैरिशेस में इजाफा किया, नए नए कॉन्वेंट खोले और हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश में रहे। मोहब्बत और इत्तेहाद की फ़िज़ा को फ़रोग़ देने के लिए शरारती और सकाफ़ती खाने होते। उन्होंने अपनी पुरस्कून शख्सियत की बदौलत डायसिस को एक ख़ानदान की सूरत में तश्कील दे रखा था। मुख्तलिफ राहिबों, राहिबात और डायसिस के अंदर या दरमियान मुख्तलिफ पैरिशों में मुकद्दसा कैथरीन की तरह सुलह और सलामती के सफ़ीर बनकर जाते और सुनहरी कामयाबी से वापस लौटते। पाकिस्तान में उनकी आखिरी सालों में वारिसपुरा पाकिस्तान का वेटिकन लगता, क्योंकि मोमनीन, रहबान, रहबात रूहानी रहनुमाई के लिए जोग दर जोग चले आते। बिशप साहब की ज़िंदगी Sober and pastoral Bishop Paul Indriyothi OP. Late Bishop Paul Indriyothi OP was a sober and hospitable bishop of his time. Whenever I was going to Faisalabad, the bishop's house, to meet Martyr Bishop John Joseph, then I had an opportunity to say hello to Bishop Paul Indriyothi. At the dining table, he would be so interested and attentive to the pastoral stories of the young priests in the early 80s. In 1993, when I was appointed rector of Christ the King Seminary, Karachi, Lahore's Bishop Armando Trinidad told me that Bishop Paul Indriyothi, who was chairman of the Seminary Commission that time, was coming to see me. I was surprised and confused for what reason he was coming to see me. Anyway, in the staff room of St. Mary's Minor Seminary, Lahore, where I was rector from September 1988 till July 1993, he told me that the Bishops' Conference of Pakistan had recommended me to be the 6th rector of Christ the King Seminary, Karachi. In addition, Bishop Paul Indriyothi OP told me that I was supposed to go to the nunciature at Islamabad, and His Excellency Renzo Frattini, the Apostolic Nuncio, would hand over an appointment letter to me. Bishop Paul Indriyothi OP was very cooperative in my 2 years of tenure as the rector of the Major Seminary. I found him always sober and a concerned pastor towards all priests of the country, and especially his own Diocese of Faisalabad. May his soul rest in peace. Amen. इंद्रियोती ओपी को इस बात का इल्म हुआ तो वो खुद खुशपुर आए, YMCO के नौजवानों से मिले, इतना जज्बाती और रूहानी लेक्चर दिया कि नौजवानों की अक्सरियत आप दीदा हो गई।
यूं बिशप पॉल की समझदारी और मोहब्बत के बायस नाराज़गी ख़त्म हो गई। बिशप पॉल अंद्रयूती ने खोशपुर में तालीमी और ज़रई व समाजी खिदमात अंजाम दी, जिसके बायस अहले खोशपुर को एक पहचान और शनाख्त मिली। बिशप पॉल यीशु के सच्चे जानशीन और सच्चे मुक़ल्लिद थे। उन पर हमेशा फ़ख्र किया जाएगा। शुक्रिया। That I remember Bishop Paul Andriotti, the second Bishop of Faisalabad. He was sincerely a man who with great sincerity served the poor. He really loved each one and always made it a point to visit the poorest of the poor, especially the sick, the disabled. He went out of his way when he traveled to make sure that he would visit them. Today, in the Diocese of Faisalabad, we remember him, and on the 10th of July we will have masses for him in different parts of the diocese. Bishop Paul Andriotti, for me, is a saint. I went to his grave in Rome, from Rome to a place, Prado I think it was called, in the mountains, and it was a hill. And there we were searching for his place. Then I said, Bishop Paul, now find us your place. And there we were standing, and I looked up and it was written there, Paul Andriotti Piazza. Oh, we were so overjoyed. Nobody was on the road, we couldn't meet anybody. And so we went and found his house, and there was a chapel there. And Paul Andriotti is remembered every day by the people there. And so is he remembered here. We pray that one day he will be canonized and we will have a saint in heaven pleading for us. He is there, but we will have confirmation from the Catholic Church of his sainthood. I knew my brother, Bishop Paul, when I was 5 years old, because he left for the Dominican seminary just the year in which I was born, in 1932. When he came back, only for 5 days before starting his seminary, he was opposed by my father, who did not want that he became a friar. My father was very strong, imposing him to remain at home, but my brother repeated, I had to go. Very kindly and meekly, but he was very, very firm. So after 5 days, my brother left and became a Dominican. The same strength and firmness he had towards his superiors in the convent. He knew that he had a missionary vocation. He wanted to join his confreres in Pakistan. They had a mission in Multan, and he wanted to join them, but he was always denied. They told him, you have to study, you will become a professor of theology, you will teach theology in our university. And he used to repeat, are you able to oppose the will of God? I know that he wants from me that I become a missionary, that I go to the missions. In 1948, they allowed him to leave. I remember that he suffered very much when he was chosen to become a bishop in Pakistan. He wanted to be a priest there, a brother of people. Anyhow, he obeyed because the Pope asked him this. But when he was consecrated as a bishop, and also when he was ordained as a priest, the awareness of the
big, huge responsibility that he had made him suffer so much. Humble and humble. He was a very prayerful man. And in prayer and in the love of people, he had the strength of accepting this great responsibility as a pastor and as a priest and bishop. He was very sincere and very loving as a friend. People loved him very much, everywhere. Even after that, he showed his sincere friendship. Sister Elizabeth, who was in charge of the hospice and Raphael Hospital of Faisalabad, who had been the daughter of my brother for many years, she told me, she wrote a letter to me to inform me that Sister Josephine, whom I met there, she was the superior of the Dominican convent in Okara, was very sick and she was admitted to the hospital and she was dying. Sister Elizabeth wrote, while giving her last breath, she thought, if Bishop Paul were here now, were alive, they would be here now to visit me. At that very moment, my brother was there at the feet of her bed, and he thanked her. Thank you very much, Sister Josephine, for what you did for Bishop Chaleo. Thank you very much. And then he disappeared. Sister Josephine recovered after that. My brother was how can I say, was a man of God. For me, he was a brother, a father, a tender mother. He was present in my life even if he was far for many years. We were not in touch, but I knew that he was following me, and he was always present, especially in difficult situations, to encourage me, to give me strength, and to advise me, and give me peace, especially to give me peace. I am sure that I owe to him, after my mother, the vocation, the religious vocation that God has given me. I think I owe to the example of prayer and love that he gave me in the very short and few visits that he had to his family. مجھے مرحوم بشپ پال صاحب کی 8 سالہ چوپانی کی عادت کے دوران ان کی رہنمائی کا شرف حاصل رہا ہے، جبکہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کی شفقت اور حوصلہ افزائی دستیاب رہی۔ اس میں کلام نہیں کہ ہر کوئی آپ کی پدرانہ شفقت اور مادرانہ محبت کا معترف ہے۔ آپ درجہ اتم روحانی، نہایت حلیم، سادہ طبع، صاف گو، بلا کے ذہین، انتہائی متحرک، بے حد فعال اور باعمل شخصیت کے مالک تھے۔ بطور بشپ ڈائسس کی کمان سنبھالنے کے سے پیشتر آپ ڈائسس کے وکر جنرل رہے اور ڈومینیکن جماعت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ یہ 1960 میں نئی قائم ہونے والی ڈائسس فیصل آباد کی خوش قسمتی اور ڈائسس کے بانی اور پہلے چپانے اعلیٰ مرحوم تقدس ماب بشپ فرانسس بینڈکٹ چیلیو او پی کی خوش بختی تھی کہ انہیں تقدس ماب بشپ پال جیسے قابل اور ذہین مددگار ملے۔ آپ کی نہایت فعال شخصیت اور ذہانت کی بنا پر مرحوم تقدس ماب بشپ فرانسس چیلیو نے آپ کو بشارتی ذمہ داریوں کے علاوہ ڈائسس میں تعمیرات، فلاحی کاموں، سول انتظامیہ سے رابط، قانونی امور اور جائیداد کی نگرانی کی ذمہ داریاں
सौंप रखी थीं। मुल्तान डायसिस की कोख से जन्म लेने वाली फैसलाबाद डायसिस की हदबंदी और जायदाद की तकसीम का अमल आप ही की ज़ेर निगरानी मुकम्मल हुआ। इस ज़माने की दस्तावेज़ पर आपके दस्तखत आपके आला मरतबे के शहद हैं। आपने मरहूम मुक़द्दस माँ बिशप चालियों के दस्ते रास्त की हैसियत से डायसिस में कैथीड्रल, बिशप हाउस और दीगर अहम इमारत की तकमील में मरकज़ी किरदार अदा किया। फैसलाबाद में मसीहों के लिए नाज़माबाद कॉलोनी और काड़ी में यकूब कॉलोनी बनाई। बांग्लादेश से आने वाले बहारियों को घर बनवा कर दिए। फैसलाबाद के शहर के मज़ाफ़ात में निज़ाम घर खोला। खुशपुर गांव में स्कूल की इमारत बनवाई और बिजली लगवा कर दी। डायसिस के मामलात के साथ साथ मोमिनीन की रूहानी ज़रूरियात के अलावा उनकी समाजी ज़रूरियात को भी तरजीही बुनियादों पर पूरा करते रहे। फैसलाबाद शहर में नाज़माबाद, गंडा सिंह वाला और वीर सिंह वाला में महकमा औकाफ की ज़मीन पर सालों से काबज़ मसीहों को मालकाना हकूक़ दिलवाए और इस तरह हमेशा गरीब मसीहों की माली मदद और कानूनी मुआवनत में पेश रहे। 1976 में बतौर बिशप डायसिस की बागडोर संभालने के बाद फैसलाबाद में नासरत कॉलोनी और इब्ने मरियम कॉलोनी बनवाई। उकाड़ा में यूसुफ कॉलोनी कायम की। डायसिस में सेंट थॉमस दी अपोस्टल असेंबली का आगाज़ किया। जॉन पॉल दोम बॉयज़ हॉस्टल कायम किया। MSSP फादर साहबान की जमात और सिस्टर साहबात की 3 जमातों को डायसिस में लाए। उनके लिए ज़मीन खरीद कर घर बनवा कर दिए। दीगर कई इमारत और कई गिरजाघर तामीर करवाए। वक्त से पहले रिटायरमेंट लेकर मरहूम बिशप जॉन जोसेफ की सूरत में कलीसिया की मुकामी क़यादत सामने लाए और रिटायरमेंट के बाद भी तमीरी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे। फैसलाबाद शहर में रेलवे कॉलोनी और जंगल सिंह वाला के मसीहों के लिए कॉलोनियाँ बनवाईं। लाहौर जहानाबाद में फ़िलासफ़ी सेमिनरी और रिन्यूअल सेंटर की तामीर करवाई। गोया आखिरी दम तक कलीसिया की तामीर व तरक्की और मोमिनीन की फलाह के लिए कारहाय नुमायाँ सरअंजाम देते रहे। दुआ है कि फैसलाबाद डायसिस की कलीसिया हमेशा उनकी रूह से सरगर्म रहे। Bishop Paul Andreotti was a Dominican. He came to Pakistan as a young Dominican priest, and he served the people of Pakistan for many years, especially in the diocese of Faisalabad, because Faisalabad was administered by the Dominicans, and before Paul Andreotti, the Bishop of Faisalabad was Benedict Chandio. And I remember that time almost all parishes, first they were run by the Dominicans, and later on priests of other congregations and diocesan, they joined. Bishop Paul Andreotti was a very humble person. He was a down-to-earth person. He was a very prayerful person. And as I recall, he was very much interested in education, in educating our Christians, and for that he encouraged and established a lot of schools in the diocese. Not only that, he also awaited opportunities to send our Catholic young men to Italy. He sent Dr. Salim Herman, and he sent Dr. Waris, and he sent Dr. Martin to get medical degrees from Italy, and they went there and they succeeded in obtaining those degrees. And also Helen, also the wife of Dr. Waris, she also studied in Italy and she also became a doctor. So as we remember Bishop Paul Andreotti, I pay him rich tribute. He was a great Dominican, he was a great missionary, and
all his life he spent for the betterment of the church in Pakistan. Also, I see that he was very much interested in encouraging young people for studies, and he was very much interested in promoting interfaith harmony and peace, and he was also very much interested and worked a lot for the Catechetical Commission and for the formation of the catechists. So as we remember him, God may grant him eternal rest, and his legacy may always remain in our hearts and in our mind. God bless and grant. I got to know Bishop Andreotti much better when I was appointed rector of the seminary in 1986. He used to visit the seminary for a couple of days every year, and right through the year we were in contact with each other. I remember on one of the visitations, the seminarians had expressed to him their concern that the seminary formation was a bit too strict. After listening to the seminarians, Bishop Andreotti came to see me with a very worried look which I had never seen on his face before. And we sat down and he explained to me what he heard from the seminarians. And he was trying to tell me that, we have to be a little soft, a little compassionate, a little understanding, we have to be a little more accommodating, etc., etc., And I could understand where he was coming from. And although I didn't completely agree with what he was saying, I just felt compelled to accept what he was saying, because Bishop Andreotti was a very sincere man, and all he wanted was to see peace and harmony among all people, and therefore I wholeheartedly accepted his advice. Coming to think of it, if Paul Andreotti was alive at the time when the Sanhedrin had hauled Peter and John and questioned them about why they continued preaching about Jesus, the famous lawyer Gamaliel, who was part of the Sanhedrin, advised them that leave these apostles alone, because if they are doing the work of God, you cannot stop them. And if it is not the work of God, it will fizzle out. So just let them go. In spite of hearing what Gamaliel said and knowing the great standing he had in the Sanhedrin and among the people, even then they had the apostles flogged and sternly warned them to stop preaching about Jesus. If Andreotti was around, yes, I'm sure he would have been able to persuade them, yes, to just let the apostles go. So they would have hauled the apostles back again and said, okay, gentlemen, you are free to go and preach about Jesus as much as you want, but please don't implicate us in your preaching. Amen. Bishop Paul Andreotti died in 1995, and I was with Bishop Patras in a Euboea in 1995. It was in July, and when Bishop Patras was told about the death of Bishop Paul Andreotti, and Bishop Patras started crying. He had tears in his eyes. He was very sad. He did not say anything, but he cried.